Students, now let us look at the economic importance or significance of transportation. Of course, transportation significance actually lies in the geographical distribution as well. So, a geographical area specializes in the mass production of particular goods and services. That actually is related to the efficient transportation. And then transportation actually it bridges the supply and demand gap inherent in the mass production oriented approaches. And transportation it actually lowers the landed cost to production factors. ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा मैकेनिज्म बन गया जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है. आपकी डिमांड और सप्लाई के दरमियान में जो गैप है इट एक्चुअली ब्रिजेस दैट गैप. वन जियोग्राफिकल लोकेशन विच इज एट अ वेरी फार एरिया, उसके लिए जो डिमांड फुलफिल की जा रही है दैट इज फ्रॉम द अदर एरिया. लेट्स से फार ईस्ट इज एक्चुअली fulfilling the demand of the Middle East or maybe the West. So what is actually happening? This is because the transportation, the efficient routing schemes, the shortest routings, the minimum spannings, the network optimizations for transportation, that it has actually helped. It has helped to bridge that gap. Gap को जो demand है उसको satisfy करने के लिए there can be any location in the world. So boundaries have actually been, it has become boundaryless. So transportation, efficient transportation mechanism, it has become more important. आपकी landed cost को कम कर देता है. The cost at which the product is actually there from so far, ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि इतनी दूर से एक चीज को import किया जाएगा and still that product would not be that costly. This is a pictorial representation where region A, the fruits and vegetables, these would actually be going to region C. From there, different products which are like sports and different sports related things would be actually going to region B, from where apparels would actually be going to region D, where electric appliances or different appliances would actually be going or shared between region A and B and C. So if you see, it is interlinked. So whatever is the speciality of one area, they can actually take it as a competitive advantage and use the transportation network to transport it where it is also required in some other part of the area. So if I'm good at making something, that can actually be used or supplied to satisfy demand in other regions as well. ये advantage सिर्फ और सिर्फ transportation की बेहतर होने की वजह से इस वक्त मिल सका है. So what has been the economic impact? The economic impact is based on the workforce mobility, ग्रोथ ऑफ सब अर्बन एरियाज, जो अर्बनाइजेशन की तरफ आ गए. सबर्ब्स भी जो हैं अब अर्बन एरियाज के वो भी इट्स लाइक डेवलप्ड वंस, एंड इंक्रीज लैंड एंड प्रॉपर्टी वैल्यू एंड टूरिज्म ऑफ कोर्स. So these kind of things have actually being benefited by the means of transportation. Transportation का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उनकी वजह से आपके पास टूरिज्म इंडस्ट्री भी बेहतर हुई है. उनकी वजह से आपके पास सबर्ब एरियाज जो हैं अर्बन एरिया के, उनकी डेवलपमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. आपके पास प्रॉपर्टी और लैंड वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, जो कि कभी बंजर गिनी जाती थी ज़मीनें, वो अब दे आर बिकम वेरी वैल्यूएबल. और उसके साथ साथ आपकी वर्क फोर्स की मोबिलिटी आसान हो गई है. इट्स वेरी ईजी टू गो फ्रॉम लाहौर टू लेट से गुजरांवाला और गुजरात, इवन फॉर वर्क. आप अपने काम के लिए भी जा सकते हैं और ये मोबिलिटी इट हैज़ बिकम ईजियर. दैट इज़ because of the transportation. So transportation has actually, it has made the mobility, it has made the landed cost, it has made the tourism easier.